Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Good morning, everybody. Good morning once again, and welcome to this session. So, continue with the MS Office sessions. And in this MS Office, we already completed the MS Word, and yesterday we started the MS Excel. And in a MS Excel, I already provided a one file that is a global superstore. Make sure everybody have downloaded that file. Make sure everybody have downloaded that file, please. Just I need to check it out. Okay. So how many students have completed, like I asked you, I gave you the one question to create the summary of the sales, profit, and discount. Say yes or no. Who completed that? I think so. Students are also joining. Anybody have some doubt related to that, like how we create the summary and what is the range from to? I told you earlier, kahan se kahan tak, and how can we, if we don't want to, if we want to ignore the middle one range, then how we can put a comma and then. Anybody? You have to join before 5 minutes, you know. Okay, so let's start again. So just for a review purpose, we completed so many things like relative reference, absolute reference, cell reference, relative reference, absolute reference, sheet reference, and book reference and mixed reference. Okay, this is we completed. And then afterward, we have seen how can we perform the basic operations. And after completing the basic operations, we already have seen how can we create the summary if we have a large amount of data. It's like yesterday, all of you have downloaded this file. This is a file which is available on the net and it is a free of cost. You can download directly. And around 50,000 data, 51,000 data are there. But this is also a very small data. You know, in the practical scenario, we will have the lakhs of data or crores of data. But in a Excel, there is a limitation because only 10,48,576 rows are there. We cannot insert the more than 10,48,576 rows and 16,384 columns. But in that case, suppose we have the large amount of data more than 10 lakh, then Excel will not work. In that case, you have to work with the database management systems like SQL, like Oracle, like PLSQL, Microsoft Azure pe jaake you have to install you can take the server from the Microsoft Azure. Is it? So, but right now we are seeing the Excel because presently we will learn the analysis with the small amount of data, like 10,48,576 is not a big amount. It's a small amount of data. Okay. Discount item 1 and 3. Okay, ma'am, done it. But can you please discount and Jyotirmay, please ask the question in a clear and concise way. Please write down the question in a clear and concise way. Because as I am getting your question, you want, like yesterday I gave you the understanding how if I have a item 1, item 2 and item 3 sales, then how can we ignore the range of item 2, right? Am I right? I think so. You are asking the question, this one. As I can understand,
from your question. Is it? Jyotirmay, please ask again. Say yes or no. And if you want anything else, then just write in a clear way. Okay. So thank you, Jyotirmay, for the replying fast. See, I told you yesterday, suppose this is item 1 cell and okay, this is, I'm having the cells. I should take a random data. Okay. So this is my item 3 cell. Okay. Now, if I want to take the complete cells, total cells, okay, please listen carefully, total cells. So first of all, you have to use the is equal to sum. Yesterday, I told you about this function, is equal to sum. Then we cannot use like this, comma this, or you cannot like this plus this. No, because you want to, you are using the functions, built-in functions, because of the, you have the large amount of data. Okay, so it is not possible to select one by one. So it will ask you the range. It is asking you the range. So range means from to. Suppose I want only this item 1, comma, then I want item 3. So put a comma between that and then you can take the total. Okay. Or suppose you want complete cell. So from, then to. See what it is written? AA4 to AC10. 2 be like the colon means 2. The colon na two dots, that is 2. It means 2, from 2. From matlab kahan se kahan tak. So we want to start from AA4 to AC10. This is a complete cell. This is the complete cell. But in case we want only the item 2, item 1 to comma item 3 cell. I want to ignore the item 2 because now this time I want two item cell, only 1 and 3. So is equal to sum. Then put a comma, then select the third one items. See, now the cell is 10842. But people are doing like this. You know, people are doing like this. They used to do this thing. Is equal to sum, then plus, then sum, then answer will be same. But the trick is not right. Now, this is not a right way to take the sum of the item 2, item 1 and 3. This is the right way, you know. See, this will reduce the Excel task, but this will increase the Excel task. इसके केस में Excel को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. But in this case, it reduces the task. So see, if you want to, if you are habitual with this kind of things, then your Excel sheet becomes heavier. आपकी sheet जो है ना वो उसकी size बढ़ जाती है. But instead of that, if you know the right way, then use this thing. Is it? Everybody is clear? Especially Jyotirmay, because you asked this question. Jyotirmay, answer me. Please answer.
Okay, thank you, Jyotirmay. Thank you for the reply. So should I move for the next? Okay, now next. Yesterday I gave, okay, I'm going to create the see functions which we are completed, we will write here, okay? Like sum, min, max, count, average. These are the functions we completed, okay? Now today we are going to check the count A. Count A. Now what is this? Count A. This means count all. You know what is the difference between count A and count C? When you count here, please check, concentrate on the like work, whatever I am doing here. Suppose I want to count the above orders. Okay. Count. How many datas are there? 51290. It's like 51291 is there, but it is giving me 51290. Okay, why it is giving me 51290? Because one data is a text, na, row ID. Row ID is a text. So it only count the number. Count and count are the difference is count only count the numbers and count A means count all. If I am using here count A, see down the see that feel the difference. Now it is 519. So I cannot use here the count now. See, it is giving me the 0. Why? Because all are the text. Text means it is not numeric data. So you should use the count A. Okay. Is it clear? Count A. Is it clear? Just do it. Count and count A. Try to differentiate it. Okay. Count and count A. What is the difference between count and count A? Try to differentiate. Completed. Okay. Next function, again, a very important function, you know. I should type here. That is count blank. As the name suggests, count blank, it counts only the blanks. For example, here I forget to write down one cell. Okay, here I forget to write down one cell. So I should count here. First of all, when I use count,
Okay, it is giving me 6. But I want how many blanks are there? So is equal to count blank. Then again, see, I'm using the control shift up arrow key. Okay, cursor key and then control shift up arrow key. And then I don't want item 2, so just shift down arrow, enter. Only one blank is there. For example, here, and so many order IDs, I think so. It's a blank. Somewhere it is blank, so I should find out. Okay, here postal codes are not there. Okay, so I want how many postal codes are blank. How many postal codes are blank? So how I can check? Is equal to count blanks. Okay, and then just select the complete range. You know something, whenever you have blank, now for example here. Okay, so when you use the control down arrow key, then it will stop on before the blank. So again, I need to select again and again. So instead of that, there is a one trick. If you have the left side data or the right side data completely fulfill, then there is a trick. Okay, now you want count blanks, count blank. But here it will give you a problem because you cannot select the. So first you have to select this control up arrow key and then control down arrow key. Enter. So 2 blanks are there. Is it clear? Count to blank. This is very important function, you know. Because see, whenever we have the large amount data, then it is a very difficult to find out the blanks or how many blanks are there. It is very difficult. So use the count blank. Is it clear? Is it clear? Anybody have some problem? Then raise the query. Okay. Don't write down your name, registration number. Just concentrate on the class. Don't write down again and again. Count to blank. Anybody have some problem? Please raise the query. Otherwise, I am moving ahead. Okay. Okay. Thank you. Thank you for the answering me. Okay. Now next. Next function which I am going to use, that is equal to fact. Fact, I am sure everybody knows. It is a factorial. It will provide you the factorial. Factorial means what? Suppose I want to check 5 factorial. So what is the 5 factorial? 1 into 2 into 3 into 4 into 5. 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Okay, this is your factorial. 5. So in a one shot, you can extract the factorial. In a one shot, you can extract the factorial. 5 is equal to factorial. Fact. Then see 120. 1 into 2 into 3 into 4 into 5. 120 is a factorial. Okay, now the next. Next function, again the important function, that is a log function.
I'm sure log function is, logarithm is clear for everybody because you learn the statistics. No? In a statistics, there is a and you have to check the, according to the base, you have to check the logarithm. For example, I want to check the 5 logarithm of 5 and the base is 2, comma. Then the log will be 2.32. It's a log. Log will return you the, gives you the logarithm. Logarithm. Okay. So this is log function, which is a very important function, again. Sometimes, is equal to log and you selected here and it is asking for the base, but you don't want to give the base because you want to check the log on the basis of 10. So it will provide you the log on the basis of 10. So logarithm. Okay. Now the next is, after the log function, there is a function that is power. Power. Number and power. Like if you want to check the power of 5 and 2, then 25, it is a square of 5. But you want no 3, then 5 into 5 into 5. 5 5s are 25, 25 into 1. Just opposite of that is square function. SQRT. No need to provide here the power because it is a square now. So 5 is a square of 2.23. Suppose I'm providing here the 25, then the answer will be 5. 25 is a square of 5. So power and then square. That is again an important thing. Is it? Anybody have some question? Raise the query if you have. Is it clear? Anybody have some doubt regarding this? These are very basic functions, very basic functions. Anybody wants to check something? SQRT for square. No, SQRT square not showing. It will show, na Jyotirmay. See, suppose I'm having 25 and I want to check 25 is a square of, so square. SQRT. It is a square of 5. Is it? This is the way how you can use now. Is it clear?
Did I move for the next? Okay. So these are the functions which I completed. Sum, min, max, count, average, counter, count blanks, then factorial, log, power n, sqrt. That is square. Anybody want to ask something like regarding these functions? Otherwise, I'm moving ahead. Okay. Okay. So next is again an important function, round function. As the name suggests, round. Because see, every number have two parts. One is a whole number part and the second one is a decimal part. Left side part is a whole number and the right side part is a decimal part. So every number have the two parts. One is a one is a whole number part and second or integer, you can say integer. Integer means number. And second is a decimal. But if you want to round the number, then basic mathematic rule is if you want to round the number and then in the decimal part, right side part, in the right side part, suppose your decimal is your like the right side part, decimal part, you have the 5 or greater than 5 number. Then it will add the one number to the left side. It will add the number to the left side. So, yes, any question? How to watch record? SQRT means square root. Yes, yes, Kaushik. Yes, rand is again the relevant. I'm telling you the rand function. No? Wait. I'm telling you the rand function. See, in a word, the rand function gives you the paragraph. But here, rand function is not like that. Okay. Wait now. Okay. Now, round function. Two functions are there. One is round up. Second is round down. And the main function is round function. So, for example, this is my decimal number. It's my decimal number. Okay. Now I want to round it. For example, I am having 121.34. So when I round it, then the answer will be 121. Because right side it is a less than 5 is equal to round. Then number, comma decimal place. I don't want decimal place, so 0. See? But if I want decimal place 1, then 121.3. In case this is 121.35, then it is 121.4. So it will follow the common rule, mathematical rule. Okay.
now is equal to, suppose it is 121.45, then answer will be 121.5. But in case it is 121.55, then answer will be 121.6. And if I don't want decimal place, then the answer is 121. Is it clear? Is it clear? So round takes two argument. One is number and second is decimal place. Second is decimal place. Round takes two argument. One is number and second is decimal place. Now, as I written here, there is a one function that is round up, who don't care about the left side. जो left side को देखता ही नहीं है. For example, I have 121.02 and I am using round up. Then it will provide me the answer 122.0. See? Though it is 0.02, उसके बाद भी ये मुझे क्या आंसर देगा? 122. Is it? Now the opposite, आप समझ गए होंगे आप इसका opposite क्या है? Round down. Round down. Again, it will not, it don't care about the right side. It always goes down. For example, number is 121.99 and I don't want to 0. Then 121. जबकि मेरा number क्या है? 121.99. The answer should be 122. But I am using here the round down. अगर मैं इसको round कर दूंगी तो आंसर क्या आएगा? 122. But अगर मैं इसको round down कर दूंगी तो ये 121 ही देगा. Is it clear? Is it clear? हाँ, राउंड अप अपवर्ड करता है और राउंड डाउन डाउनवर्ड करता है. ओके. Right? Now next. Next is next function is M round. M round, as the name suggests, M stands multiple. M round. Again इस फैमिली के 3 मेंबर्स हैं. पहला तो खुद बड़ा मेंबर M round. Second is floor. Third is ceiling. 3 members are there, floor and ceiling. Now it also takes two arguments, number and decimal place. For example, here ये मेरा टैक्स आया है ना, टैक्स समझते हो ना, टैक्स इनकम टैक्स जो आता है. सपोज ये मेरा इनकम टैक्स आया. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपसे वंस में टैक्स नहीं लेती. इट ऑलवेज आस्क, इसको आप क्या करो, टेंस में राउंड करके दो. तो आप कैसे करोगे? M round this comma 10 because you want in a tens round. Just do it. Do it.
Now, sometimes, we want it should be the multiple of 2. This is not a multiple of 2. So I can type here this comma 2. It will provide me the multiple of 2. Okay, multiple of 2. Is it clear? Is it clear? Anybody have some doubt? See, it is like income tax is a very good example of M round. Income tax is a very good example of the M round because income tax department wants the tax should be in the multiple of 10. The tax should be in the multiple of 10. Is it clear? Right? Now the next. Okay, this is the M round function. It takes 2 argument number, comma, multiple. किसके multiple में चाहिए? You see here it is written significance. Okay. Next is, and it will follow the rule. That is, if it is 2 or like for example, suppose ये 2 का multiple नहीं है. What will be the remainder? It is not a multiple of 2 now. So it is giving me the 1206 because it is seeing na 5 great for 5 last जो है इसका digit वो 5 या 5 से ज्यादा है और अगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ then it is providing me the 1202. So you have to like think about it. उसको सोचना है ढंग से ध्यान से करना है कैसे करते हैं. Now the opposite is now suppose I want the multiple of 5 then it is 1200 क्योंकि ये और अगर ये suppose करो 6 होता तो 1205 आ जाता ना. लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? ये मेरा 1 है, ध्यान से देखिएगा. This is 1. It is giving me 12. But I want it should be upward. It should give me the upward result. Then ceiling, same thing I am using. This comma 5. The answer will be 1205. Is it clear? And just opposite is, this is ceiling, huh? Ceiling, again number, comma, significant. Same thing. And I am using here the ceiling. It always gives you the upward result. And the opposite is, if it is 12.06. And the opposite is floor. This comma 5. What will be the answer? It will never goes high. And if it is ceiling, see, ceiling will give the upward result and floor will give you the downward. Okay. Floor. Number, comma, significant. Here is spelling mistake. Okay. So these are 3 functions. I'm sure it is clear. Now come to the point. The student is asking, one of the student is asking, ma'am, rand function. I told you rand function in Word, but there it will provide you the paragraph. But here it will not provide you the paragraph now because this is the spreadsheet software now. So in a spreadsheet software, rand will provide you the decimal numbers, random decimal numbers. For example, no argument is there. I want here the random percentage. मुझे ना यहाँ पे कुछ random percentage चाहिए. So is equal to rand.
It will provide you the random number between 0 and 1. ये देखो, ये 5 रैंडम वो आपको चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए. Every time rand function will change. Every movement, even every movement, है ना, हर movement पे ये change होगा. When the sheet refresh, देखो, F9 is a shortcut key to refresh the sheet, and you can set it in a % format. Every movement it refresh the, it change the numbers because it is random ना, random है ये. Random का मतलब ही यही होता है जो changeable. So I'm checking actually. So this is the rand, and suppose I want the random number between the 1 and 10,000. So there is a one function that is rand between top and bottom, comma top. It always gives you the random number between bottom and top, whatever you mention here. For example, you want random numbers between 1 and 10,000. Then is equal to rand between. Then 1 comma 10,000. See, every time it will get refreshed. Every time it will get refreshed. Is it? F9, 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 F9. Every time it will get refreshed. See, F9 is a shortcut key to refresh the sheet. Anybody have some doubt? Anybody wants to do something? कुछ पूछना है, कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप you can share the screen also. Should I move ahead? आगे बढ़ जाऊं? Answer me. Are you doing simultaneously? कौन स्टूडेंट कर रहे हैं? Very good, Clay. Very good, Javeri. Thank you for the replying. कौन कर रहा है simultaneously? Please answer me.
Okay. So I'm moving ahead. Okay. How to change it to percentage to decimal? See, if you are having the percentage, so if you want to change it in the decimal, then home, go to the home. There is a format. Just change it the number format. This is a very simple. Is it? Anything else you want to ask? Very good, Nitin. Suraj. Okay, so many students are doing simultaneously. Very good. Okay. Now, the next is, see, after random function, these are the very important function, you know. These are the very important functions. Now, these are the functions which falls under the maths and statistical category. Whatever the function we covered here, na, these are the functions which falls under maths and statistical category. Because in Excel, 13 categories are there. How many categories are there? 13 categories are there. Out of 13 category, we almost done with first category. Still, so many functions are there in the first category. Maths and trigonometry, like maths and statistical category, the trigonometry functions are also there. Trigonometry, I think so, sine theta, cos theta. You are aware with that. So if you wish to learn about that, then you can use that functions also. But in our field, that is not a much more important. So we are not moving for that. We learn the functions which are very much important in our field. ऐसे तो बहुत सारे functions. But these are the functions which we used to do in our regular work. ये हमारे regular work में काम आते हैं functions. Counta, sum, main, max, count, average, counta, count blank, fact, log, power. ये कुछ functions है जो बहुत काम आते हैं. Okay, so now I'm moving ahead and I'm going to give you the understanding on text category. But before that, मुझे कुछ आपको बताना है, समझाना है कि कब टेक्स्ट कैटेगरी आएगी, कब मैथ्स कैटेगरी आएगी. आपके पास कोई भी नंबर्स है ना, जैसे आपके पास ये नंबर है. अब इन नंबर से जब भी आपको काम करना होगा तो प्लीज थिंक अबाउट द मैथ्स कैटेगरी, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल कैटेगरी. इसमें टेक्स्ट कैटेगरी का काम नहीं है. इसमें टेक्स्ट कैटेगरी का नाम काम नहीं. अब अगर मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास है राइट, इस तरह से कुछ लेटर्स हैं, वर्ड है, सेंटेंस है, कुछ भी है. सेंटेंस भी तो हो सकता है ना आपके पास. बट यूजुअली वी नेवर राइट द सेंटेंस इन द एक्सेल. वी ऑलवेज यूज टू राइट द सेंटेंसेस इन वर्ड, है ना. वर्ड में लिखते हैं हम, कभी यहाँ नहीं लिखते. अब इनसे कुछ काम करना हो आपको तो मतलब इनसे क्या काम कर सकते हो आप बताओ. यू वांट टू फॉर्मेट दिस. फॉर्मेट क्या करना है, इसको अपर लेटर पे ले जाना है. तो जैसे एक्सेल में, वर्ड में, अगर इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू अर्लियर व्हेन आई टॉट यू द वर्ड, कि वर्ड में आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है इन होम, देयर इज अ ऑप्शन ऑफ सेंटेंस केस, लोअर केस अपर केस. सी, अपर में चेंज हो गया और ये लोअर में चेंज हो गया और कैपिटलाइज ईच वर्ड में चेंज हो गया. बट ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है. रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज एक्सेल इज नॉट अ document writing software. Excel is not a document writing software. It is a electronic spreadsheet software. So whatever you want to do, you have to use the functions. आपको सबके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन यूज करना पड़ेगा.
आपको सबके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब उसके पहले एक और चीज बतानी है। अब क्या होता है कि आपने यहाँ पे कुछ काम किया है, यहाँ पे आपने कुछ काम किया, लाइक रेंट फंक्शन ही ले लिया, चलो। अब ये रेंट फंक्शन एवरी टाइम इट विल रिफ्रेश। बताइए ये क्यों रिफ्रेश हो रहा है? क्योंकि इसमें फंक्शन है इसलिए रिफ्रेश हो रहा है। अगर इसमें फंक्शन नहीं होता तो ये रिफ्रेश होता क्या? आंसर मी। अगर इसमें फंक्शन नहीं होता तो क्या ये रिफ्रेश होता? या वाशिम, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो। मैं उसी पॉइंट पे तो आई हूं, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि अगर इसमें फंक्शन नहीं होता तो ये रिफ्रेश नहीं होता ना। विनीत, कंसंट्रेट ऑन द क्लास, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द क्लास। अभी असाइनमेंट की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेल की। तो प्लीज, हाँ, दिस इज द रिक्वेस्ट। यस वाशिम, सी, इफ हियर अगर यहाँ फंक्शन नहीं होता तो ये रिफ्रेश नहीं होते। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको फंक्शन को हटाऊं कैसे, मुझे वैल्यू तो चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको जस्ट सिलेक्ट, कंट्रोल सी इज अ कॉपी, कॉपी कर लीजिए, एंड देन होम पे जाएं और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल ओपन करिए, यहाँ ले लीजिए वैल्यूज। अब ये रिफ्रेश नहीं होगा। देखो F9 करती हूँ, क्या रिफ्रेश हो रहा है? ये रिफ्रेश हो रहा है, पर वो रिफ्रेश हो रहा है क्या? आर यू गेटिंग? कॉपी पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यूज, कॉपी पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यूज। प्लीज आंसर मी वाशिम, इज इट क्लियर? Do it with yourself, copy paste special paste values. Do it with yourself. Paste special paste values. Done. Is it clear? Yes. See, Dipankar, the thing is presently here it is the function, and through the function the value is there. ये function के through ही तो value आ रही है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, फंक्शन नहीं चाहिए, तो पहले तो इसको कॉपी कर लो। अगर यहीं पे ही फंक्शन हटाना है तो कोई इशू नहीं है, नहीं तो यहाँ चाहिए तो यहाँ कर लो। Then open the paste special value. Alter Control V is a shortcut key for the paste special. And then value. Select from here the value. देखो अब क्या हुआ, इसमें फंक्शन नहीं है बट यहाँ पे फंक्शन है। देखिए यहाँ फंक्शन नहीं है बट यहाँ पे है, और हम क्या चाहते हैं, यहीं पे ही वैल्यू चाहिए तो कॉपी कर लो, फिर से ओपन कर लो और वैल्यू दे लो, तो यहाँ से फंक्शन हट जाएगा। ये देखो अब यहाँ से भी फंक्शन है। इज इट क्लियर?
पेस्ट स्पेशल, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, क्योंकि कॉपी के बाद ही तो पेस्ट ओपन होगा ना, अदरवाइज किसे ओपन होगा? तो फर्स्ट यू हैव टू कॉपी, देन पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यूज. इज इट? Shall I move for the next? Okay. So copy, paste, spatial, right? Next. Now we will talk about the text category function. In a text category function, how many functions are there? First, you should check. Okay. And through that, what we can do? If you wish, suppose you want to format this data, order ID. Here, all the datas are given in the capital CAINES. This is the capital. But I want it should be the small, or the first letter should be the capital. So if you want to format this data, then in that case, you have to use the function. There is no shortcut key or no utilities here. No option is given for the change case like upper case, lower case, capitalize each case or sentence case. So for that, you need to insert a one column here. Just insert a one more column. I told you the shortcut key is Ctrl+Shift+. Now is equal to upper. Okay, upper is already there. So lower. See. And then double click, because I told you what double click does. And here is a B2, here is a B3, here is a B4. Lower. And just opposite of lower is upper. And the one more is proper. One more is proper. Instead of lower, you should use proper. First letter capital. Is it clear? Now you don't want these two columns, then copy and Alt Control V, paste spatial, and then delete it. Is it? You have to use the paste spatial every time. So that's why I told you first paste spatial, then first of all, I need to announce something. Like everybody is asking about the how to submit the assignment, because ma'am sent you the one tele question and regularly will send you the questions. For that, I will provide you one email ID, and on that email ID, you have to submit the assignment, but not right now.
at the end of the class. And your class almost will be end in the first week of August. In the first week of August. So in the first week of August, you have to submit the assignment through the mail. Okay, and I'll provide the mail ID. Not right now. So please don't ask the question again and again to submit the assignment. You do your work because you are getting the assignment. Do your work, complete it. Just keep it safe. Save कर लीजिए अपने पास. And then I'll ask in the first week of August, and I'll give you one email ID so that you can send on the email ID. Is it clear? Now, please don't ask the question again and again. बार बार ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, right? Is it clear? Clear? Please don't ask the question again. Huh? Next time, I'll not give you the answer. Clear? So should I move for the next? Okay. Now, upper, lower, proper. These are three functions which are very important for the formatting purpose. Upper, then text, whatever you want. Then lower, then text. Then proper, then text. So these are the three functions very important. But before that, I gave you the understanding of copy, paste special. Paste is special, okay? Now, again, the left is, again, the next functions are very important functions. You know, sometimes you want to extract the letters from the given order ID. है ना, जो ऑर्डर आईडी है ना, इसमें से आपको क्या करना है, लेफ्ट के 2 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने. लेफ्ट के 2 कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने. बिकॉज मे बी इट इज अ कंट्री कोड or a state code or whatever, and you want to extract this code, these code, left 2 codes. So how you can extract these codes? There are again the 3 functions which are very important: left, right, and mid. Left, right, and mid. It takes 2 argument. कितने निकालने हैं, num care, क्योंकि उसको कैसे मालूम पड़ेगा लेफ्ट में से कितने निकालने. Same thing is here, text, then num care. So start working. I want to extract the 2 characters from order ID from the left side. So left, text, comma 2. See? Left, text, then comma numchar. Numchar means how many characters you want to extract. Is it clear?
Now in case, suppose you want to extract the character of right side. Character of right side. So, for example, here itself, okay. Here, I want to characters of right side. So, is equal to right. Because all are the characters in the within a text, huh? It is assuming all are the characters. You cannot say like that, ki ma'am, ye to number hai. No, it all are the characters. Then 5, 6. See, 1, 2, 4, 8, 9. Because it is treated as a character. It is treated as a character. See, here it is 5. Then it is extracting the dash sign also. It is now, again, I am going to give you the one clarification. अगर आप एक्सेल के साथ काम कर रहे हो तो आपने ये कंसंट्रेट किया होगा. सी वी आर द CMA. CMA इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, है ना, जो फिगर्स के साथ काम करते हो आप. इवन यू हैव टू परफॉर्म द कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो. सो आपको ना बहुत कंसंट्रेट होके काम करना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको सभी को करना चाहिए, बट इन आवर फील्ड इट इज वेरी स्पेसिफिक कि बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है. अब अगर आपने एक्सेल में ध्यान दिया हो, so when you insert the number, then it automatically take the right alignment. अपने आप राइट में हो जाता है. When you insert some character, then it always be the left alignment. अब इसने A2, one is character, one is text, so it is alphanumeric. It always take the left alignment, है ना. ये क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है. और अगर मैंने कोई डेट डाली है तो राइट अलाइनमेंट हो जाता है. अगर मैंने कोई परसेंटेज डाले तो भी राइट अलाइनमेंट, बिकॉज दीज ऑल आर द नंबर फॉर्मेट ना. ये तो सब नंबर के ही फॉर्मेट है. टेक्स्ट लेफ्ट में जाता है, बाकी नंबर के फॉर्मेट सब कहाँ चले जाते हैं, राइट, है ना. ये ध्यान देना पड़ता है आपको. सो हियर पोस्टल कोड इज देयर, दिस इज नंबर. बट अगर मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज करती हूँ, टेक्स्ट फॉर्मूले में यूज करती हूँ, इज इक्वल टू लेफ्ट दिस कॉमा 1, तो ये इसको एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर लेगा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट फंक्शन में इसको यूज किया है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? If there is a space between character, Nitin, I'm not giving you. I'm not getting properly. Which function will give only the right numbers? Right function. Just now I told you, no? Right functions. Javeri, Divyanshi, it is the right function. Is there a space between character? Is there a space between character? No, okay.
इन केस ऑफ स्पेस, हाँ, ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट. देखो अभी इसमें स्पेस का प्रॉब्लम समझाती हूँ. बिकॉज नितिन आस्क इज देयर अ स्पेस. इफ देयर अ स्पेस, तो स्पेस के साथ तो बहुत ही अलग डिफरेंट प्रॉब्लम है. बिकॉज सी स्पेस इज नोन एज अ कैरेक्टर. हाँ, यहाँ मैं अलग से करके बताती. फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज रिटन CMA and then space is there. ध्यान से देखो. When I press F2 तो स्पेस है ना आगे. अब मैंने इसको बोला इज इक्वल टू लेफ्ट राइट दिस कॉमा 2. क्या दे रहा है? खाली. क्यों? बिकॉज स्पेस इज देयर ना. If I remove the space, then it will gives me the AJ. Is it clear, Nitin? Thank you. It's a very good question, you know. Very good question. Is there a clear? Is it clear? Yes. Okay, Divyanshi, I got the things. That's when you want. You are asking. Now you want the right side, na? So no matter, because see all will be treated as a character, na? If here it is dash, then also it will provide you the dash. See, because dash is also a one character. Is it clear, Devanshi? Okay, now next. Suppose I want, because see, the order ID is a combination of state code, year, and then order number. Now I want to extract the year. Year, कौन सा साल है मुझे सिर्फ वो चाहिए. तब क्या करूंगी मैं कैसे निकालूंगी अगर मुझे बीच के कैरेक्टर्स चाहिए तो कौन सा फंक्शन है? मिड वाला. कौन सा फंक्शन है? मिड. अब मिड में देयर आर 3 आर्गुमेंट. वन इज टेक्स्ट, इसमें से निकालना है. सेकेंड इज स्टार्ट नम कैर, कहां से शुरू करे काउंटिंग. एंड नम कैर, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट. स्टार्ट नम कैर मींस कहां से काउंटिंग शुरू करें. अब ध्यान से देखिए. एज यू ऑलरेडी नो, बिकॉज यू आर द कंपनी वर्कर, आप कंपनी के साथ काम करते हो तो आपको पता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है ऑर्डर आईडी में. फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स आर द स्टेट कोड्स, देन डैश इज देयर, एंड देन ईयर इज देयर. और ईयर हमेशा क्या होता है? 4 नंबर का होता है. वाई 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 वाई. अब मुझे वो 4 नंबर चाहिए, बट कहां से स्टार्ट करें? चौथे से, क्योंकि 1 2 3 तो ये हो गए, चौथे से स्टार्ट करें. तो मैं कैसे ले सकती हूँ? इज इक्वल टू मिड दिस कॉमा 4. कितने चाहिए? 4. ये देखो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके, इफ देयर इन एनी कंफ्यूजन देन ये बताइएगा. चलिए, इफ आई एम हैविंग 1 पैन कार्ड, अब मुझे बीच के 4 चाहिए. बताइए, कौन बताएगा? राइट डाउन. I want to extract the middle numbers from the PAN card. Devanshi, just write down the example कि क्या चाहिए, किसमें से चाहिए, क्या चाहिए. Then I'll give you the example.
Okay, do it. Now I want to extract the numbers within a PAN card. And I know the PAN card format is शुरू के 5 characters होते हैं, फिर 4 number होते हैं, फिर एक character होता है. So I want to from the 6th position 4 numbers. Then is equal to mid, comma 6. 6 is a what? From which position it should count and how many characters I want 4. This will treat it as a character. देखो ये left side में दे रहा है ना. Because this is alphanumeric ना. So इसको तो character की तरह treat करेंगे ना. Just do it. Completed. Any doubt? Devanshi, if you like want something, then please again raise the question, but is equal to mid function. No, right at, it's not right at, it's right, then text, then 8. Okay, got it, Devanshi. That means you want only numbers. If the dash is there, then I should use the combination of function. तब मुझे चेक कराना पड़ेगा कि अगर ये नंबर नहीं है तो उसको नहीं दे मुझे, राइट? उसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा. आई एम श्योर दिव्यांशी यू आर आई एम ऑडिबल टू यू एंड आप ध्यान से सुन रही है मैं क्या बोल रही हूँ. In that case, I need to use the other function also. Because see, right is not a right function to find out कि ये नंबर है कि नहीं है. तो पहले तो मुझे एक फंक्शन ऐसा लगाना पड़ेगा जो ढूंढे कि ये नंबर है कि नहीं. अगर कुछ और है तो वो छोड़ दे. I got it, Devanshi, and I got your question in a very clear and concise way. I'm sure कि आप यही चाहती हैं कि अगर डैश हो तो उसको छोड़ दे, बट इसके लिए कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा फंक्शन का. ओके, एंड लेटर ऑन वी विल डू द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन. सो उस समय आप ये चीज फिर रेस करिएगा. आई रिमेम्बर इट, बट आप भी इसको फिर से रेस करिएगा. अभी तो कॉम्बिनेशन यूज करवा ही नहीं रही हूँ ना मैं आपको, अभी तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बता रही हूँ.
कैन यू इलॉबरेट? हाँ हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन है ना, मुझे इसके साथ किसी और फंक्शन को भी कंबाइन करना पड़ेगा. आई कैन नॉट यूज दिस थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन. राइट फंक्शन ये नहीं करता है. राइट तो क्या करता है, बिना देखे ये कि क्या है, बस वो काउंट करके दे देता है, दैट्स इट. राइट फंक्शन विल ओनली प्रोवाइड द नंबर्स or text or characters without checking ki whether it is character or number or what. For that we need to use the another function for checking कि अगर ये नंबर नहीं है तो मुझे नहीं प्रोवाइड. ओके, गॉट इट देवांशी? ओके, सो आई एम श्योर देवांशी आप समझ गए होंगे. यस, थैंक यू सो मच. ओके, सो लेफ्ट, राइट एंड मिड. ओके, these are the functions left, right and mid. Now the next is a very important function, you know, again, like you know sometimes what, कई बार क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं. Like here the customer name is there and here the customer ID. You want the customer ID and the customer name both in a single cell. आपको ये दोनों एक साथ चाहिए एक सेल में. So there is a one function, the function name is, and it is a very थोड़ा सा ये देखने में टिपिकल लगेगा फंक्शन, concatenate वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 एंड सो ऑन, कितनी भी वैल्यू को जोड़ सकते हो आप. अब ये कैसे चलता है देखिए, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट दिस कॉमा दिस, ये आ गया. इजी है ना. अब मुझे इसके साथ स्पेस भी जोड़नी है तो एक स्पेस बार डाल दो इन्वर्टेड कॉमा में, है ना. ऐसा नहीं कर सकते हो आप, द पीपल आर डूइंग लाइक दिस, बट नथिंग हैपन. व्हाई? बिकॉज आपने उसको स्पेस कहाँ जोड़ने को बोला. सो यू हैव टू इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस बार दे दीजिए, अब जुड़ जाएगा. देखो, राइट. दिस इज अ वेरी गुड फंक्शन, यू नो, कॉनकेटिनेट. बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत काम आता है. क्योंकि कई बार हमारे पास नाम आते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग आता है, उन दोनों को जोड़ना पड़ता है, तब क्या करेंगे आप, कॉनकेटिनेट यूज करेंगे.
I'm taking the class, right? I am in the session. So don't call me within a session. No, you have to join the session. अभी मैं सेशन दे रही हूँ, अब बात बताएं. ओके, नाउ कॉन्केटिनेट में आप कुछ भी कहीं से भी जोड़ सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट, बिफोर you want to add the CMA and inverted comma then comma, see, and then double click. Is it clear? Is it clear? Next, now instead of concatenate there is a very good operator. Okay, operator का मतलब क्या होता है? देखो, ये arithmetic operator है, but it is giving me the error. So instead of that, if you want to join, then use the AND operator. See, this is known as a concatenation operator. फिर आपको स्पेस भी जोड़नी है तो अगेन AND. Is it clear? One is a function is a concatenate and second one is a concatenation operator. This is the operator, you know. Concatenate function is used to join the one or two or more than one values, and operator is also used to join the values. That is AND operator. That is given above the 7. 7 के ऊपर दिया हुआ है, कीबोर्ड की जो 7 की है ना उसके ऊपर दिया हुआ. Any doubt? Concatenate and concatenation. Is it clear? Is it clear? Okay. I should move ahead. Ma'am, those two or more similar. So can we use the second one instead of first one? ज्योतिर्मय प्लीज क्लियर ना, मुझे मतलब मुझे समझ में आ रहा है आपके क्वेश्चंस बहुत अप टू द मार्क है, एंड थैंक यू फॉर द केयरफुली लिसनिंग द लेक्चर. थोड़ा सा और क्लियर बोलो ना. आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपरली. मैम, दोस टू और मोर सिमिलर. आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपरली. Just write in a clear way, please. Again, Jyotirmay. I'm sure it's a very good question. आप जो पूछ रही हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर दो सिमिलर हो तो उनको ज्वाइन नहीं करना है. यहाँ सेकंड चाहिए इस पहले के बजाय. Yes, 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 Jyotirmay. Actually, you know, instead of concatenate, one more time I should use. Okay. देखिए, जैसे मेरे पास एक ये फाइल है, राइट? ये फाइल. अब इसमें मेरे पास आई हैव द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. और अगर मैं इस फंक्शन को यूज करती हूँ जो मैंने अभी आपको फंक्शन बताया, दैट इज कॉन्केटिनेट.
दैट इज अ वेरी टिपिकल फंक्शन यू नो। और मैंने बताया है, जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि जितने फंक्शन यूज करोगे ना कॉम्प्लिकेशन होंगे आपकी शीट में और आपकी शीट हैवी हो जाएगी। कॉनकेटिनेट डेफिनेटली ये थोड़ा टिपिकल है फंक्शन, कॉमा, है ना। बट इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या यूज करो, इज इक्वल टू दिस इज वेरी इजी ना। यस ज्योतिर्मय, वेरी गुड, ये यूज करना चाहिए, एंड ही यूज करना चाहिए। बट कॉन्केटिनेटर इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि समटाइम्स यू नो वी आर गेटिंग द डेटा इन विच द फंक्शंस आर ऑलरेडी देयर। हम जो डेटा लेते हैं ना उसमें फंक्शंस लगे हुए रहते हैं, तो हमको समझना पड़ता है वो फंक्शन क्यों यूज किए गए। तो दैट्स व्हाई आई गेव यू द क्लेरिफिकेशन अबाउट द फंक्शन। अदरवाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो, एंड ऑपरेटर। एंड इंस्टेड ऑफ, देखो इसमें या इसमें एफर्ट किसमें ज्यादा लगेंगे एक्सेल को एग्जीक्यूट होने में, इसमें, क्योंकि इसमें एक फंक्शन है और फंक्शन में कोडिंग होती है, कोडिंग पहले एग्जीक्यूट होती है, पर यहाँ पे उसको ऑपरेटर है, यहाँ पे उसको एफर्ट थोड़े कम हो जाए। तो यस यस ज्योतिर्मय, गुड गुड, वेरी गुड। So you have to use the concatenation operator instead of concatenate function. But you should aware कि concatenate function क्या होता है, पता होना चाहिए, but use हमेशा operator ही किया जाता है। I also use the concatenation operator. I never use the concatenate function. Only मैंने एक या दो बार इसको पहले पढ़ा, फिर एक या दो बार यूज किया, क्योंकि जब एग्जाम होती है ना माइक्रोसॉफ्ट की, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट already Microsoft planned one exam, that is the MOS एग्जाम। माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम होता है एक MOS एग्जाम, जिसमें अगर आपको एक्सेल की सर्टिफिकेशन चाहिए ना तो यू हैव टू गिव दैट एग्जाम, और उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न एवरीथिंग ना, बिकॉज आई माई सेल्फ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, मैंने उसको क्लियर किया था, तब उसके लिए ये सब चीजों को समझना पड़ा था। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू understand these functions. Only AND operator, because in our field we used to concatenate with the AND operator. Both are the same thing, दोनों में चीजें सेम ही होंगी, हाँ, both are the same thing. Anybody? Anybody have some problem regarding that? और कुछ? Should I move for the next? Okay. Now there is a one more function. इसी कैटेगरी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। Okay. We are continue with this category, text category. There is a one function that is substitute function, as the name suggests. What is the meaning of substitute? I'm sure everybody knows the substitute. The meaning of the substitute सबको पता होगा. If you don't know, then just select here and shift F7. This is the dictionary. This will open the dictionary. See, substitute. Temporary, standby, alternate, alternative, replacement. This is the synonyms of substitute. And we already learned the word now. In a word, one dictionary is there that is known as thesaurus. Shift F7. So substitute is a replacement. For example, suppose I am not taking your classes. So instead of me, my substitute will be there na? कोई तो लेगा मेरी जगह पे. Now substitute function takes three arguments majorly. One is text. Second is old text. फिर new text. Old मतलब इसका मतलब क्या है, किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है और क्या नया लगाना है, ठीक है। और एक और रहता है दैट इज ऑकरेंस, इसको हम पढ़ेंगे। व्हाई इट इज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट,
Because whenever the argument is in a square bracket, that are optionals. The arguments which are in a square bracket, that are optionals. For example, here is equal to substitute. Fourth one argument is an instance number. That is optional. You can leave it blank. इसमें से डैश हटाना है और नया क्या रखना है? नया रखना है आपको ये. देखो, आई थिंक सो ज्योतिर्मय, यू गॉट योर आंसर. आप चाहते थे ना माइनस हटा दे. ट्राई करिएगा, अदरवाइज आई विल टेल यू. मैं बताऊंगी आपको उसको कैसे यूज करना. इज इट? दिस इज द सब्स्टिट्यूट फंक्शन and it is a very good function. Now the question is, what is instance number? पहले इसको कर लो. ओल्ड टेक्स्ट क्या हटाना है और कहां उसकी जगह क्या रखना है? न्यू टेक्स्ट. Is it completed? Any question? Any question? Please use the substitute function fast. Do it fast, huh? Substitute function. Do it. I'm waiting for your reply. Completed?
Any doubt? Now I'm going to tell you the instance number. Done. Okay. So now instance number is what? See, इसमें dash कितनी बार आए हैं? 2 बार. Suppose I only want substitute in the first place. तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा? (1). और अगर मैं कुछ नहीं दूंगी तो वो सबको हटा देगा. देखिए. Only it replace the first occurrence. Second, as it is there. Is it? So I'm sure occurrence समझ में आया होगा कि occurrence क्या होता है. What is occurrence? Is it clear? And it is the occurrence. It is optional. The argument which are given in the square bracket that are optional. You can leave it blank. If you leave it blank, then default it will take all the occurrence. Is it clear? Default it will take all the occurrence. जहां भी आया होगा सब जगह से हटा देगा. But if you mention here the occurrence number, then it will remove only from that place. जैसे हमने यहाँ पे क्या दे दिया? First occurrence. I provide here the first occurrence 1. तो इसलिए अब मैं यहाँ पे suppose I am providing here 2. Then बताइए आंसर सोचिए क्या होगा. पहली डैश वैसी ही रहेगी, बाकी हट जाएगा. See? I'm sure the student who were asking कि मैम वो डैश नहीं चाहिए, तो वो समझ आ गया होगा कि डैश कैसे हटाना है. बट उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा. वी कैन नॉट यूज अ सिंगल फंक्शन. एक फंक्शन से काम नहीं होता है. टुमारो वी विल चेक कि कैसे हम फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करते हैं. मल्टीपल फंक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं. टुमारो वी विल चेक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस. बट मेक श्योर जो मैंने आज बताया वो सब आ जाना चाहिए आप. ओके. इन द लास्ट फंक्शन, आज का ये आखिरी फंक्शन है जो बता रही हूं मैं, दैट इज रिप्लेस फंक्शन. अब रिप्लेस फंक्शन भी सेम चीज लेता है ना. लेकिन अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सब्स्टिट्यूट एंड इसमें क्या डिफरेंस है? सब्स्टिट्यूट आपसे ओल्ड टेक्स्ट पूछ रहा है. यहाँ पे ये ओल्ड टेक्स्ट नहीं पूछेगा. ये पूछेगा स्टार्ट नम कैर. ऊपर पड़ा था ना मिड में. एंड ये न्यू की जगह पूछेगा नम कैर. आई एम श्योर कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा. प्लीज आंसर दीजिए. जिनको समझ में आ गया वो लोग कोशिश करिए. क्या क्या लिखा है मैंने. जिनको समझ में आ गया प्लीज आंसर मी. what is it? What is the difference between start num and old text? Just try to answer me. I'm sure some students are getting properly. Because see, this is the human nature. पहले दिन आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी. दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे जैसे हम रोज टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, क्लास लूंगी, तो आई एम श्योर कि यू आर गेटिंग नाउ क्लियरली. अब आपको मेरी चीज सही समझ में आ रही होगी. आई एम श्योर दिस इज द ह्यूमन नेचर. इट्स अ कॉमन थिंग.
what is the difference? Like you, as per you, what will be the difference between the substitute and the replace? The substitute will ask for the old text, but replace will ask the start num care. Now please check. अब मुझे यहाँ पे replace यूज करना है इसकी जगह पे, तो कैसे होगा देखिए, इज इक्वल टू रिप्लेस. इट इज नॉट आस्किंग कि ओल्ड टेक्स्ट क्या करना है, ये पूछ रहा है कहां से रिमूव करना है, तो मुझे थर्ड से रिमूव करना है. कितने रिमूव करना है? 1, है ना. कितने रिमूव करना है? 1. और नया कुछ नहीं डालना है, तो ये ऑप्शनल नहीं है, इसलिए कॉमा लगाना पड़ेगा. सी, this is the difference between substitute and replace function. Substitute and replace function. Is it? समझ में आ गया? Substitute and replace. The difference between substitute and replace is it is asking for the place number. कौन से place से remove करना है और कितने remove करना है. I'm sure everybody is getting, and I'm sure, I'm very confident. मुझे confidence है कि आप लोगों को जो मैंने आज पढ़ाया है, you got it in a very clear and concise way. If not, then please raise the query. अगर नहीं समझ में आता है तो regular query करिए, because as you are like seeing from last so many days, I'm checking your questions and I'm trying to regularly answer you. मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आंसर भी साथ साथ में देती जाऊं. So that's why, and अब मैं थोड़ा स्लो भी चलती हूँ. Is it clear? So thank you so much. Thanks for the patience listening, and I'm very happy कि कुछ बच्चे बिल्कुल regularly ध्यान से पढ़ रहे हैं. They are asking the question, so I'm very glad for that. And those who are silent students, like I'm not sure they are doing or not, try to concentrate on the class और साथ साथ में करने की भी कोशिश करिए. So thank you so much. Thanks a lot. Bye and take care. Tomorrow we will check the combination of functions. Okay. Thank you. Thanks a lot. Bye and take care.